पञ्चमोऽध्यायः। ॐ अस्य श्री उत्तरचरितस्य रुद्रऋषिः महासरस्वती देवता अनुष्टुप् छन्दः भीमाशक्तिः ब्राह्मरी बीजं सूर्यसत्त्वं सामवेदस्वरूपं महासरस्वती प्रीत्यर्थे उत्तरचरित्रपाठे विनियोगः। ध्यानम्। ॐ घण्टाशूलहलानि शङ्खमुसले चक्रं धनुं सायकं हस्ताब्दे ददन्ति घनान्तविलसच्चितान्ततुल्यप्रभां गौरीदेहसमुद्भवां त्रिजगतमाधारभूतां महापूर्वमत्र सरस्वती मनुभजे शुम्भादिदैत्यानीं। ॐ क्लीं ऋषिर्उवाच। जयन्ती मङ्गलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वाहा सदा नमोऽस्तु ते। पुरा शुम्भनिशुम्भाम्य सुराभ्यां शचीपतेः त्रैलोक्ययज्ञभागाश्च हृता महामदबलाश्रयात् तामेव सूर्यता तद्विदाकारं तथैरवं कौबेरमतायाम्यां च चक्राते वरुणस्य च तावेद पवनद्यी च चक्रुतुवह्नि कर्म च ततो देव विनिर्भूता भ्रष्टराज्यापराजितः हृताधिकारा स्त्री दतस्ताभ्य सर्वे निराकृताः महासुराभ्यां त्वां देवी संसृतारत्यपराजितां तयास्माकं वरो दत्तो यथा पत्सतु स्मृताखिलाः भवतां नाशयिष्यामि तत्क्षणात् परामापदा इति कृत्वा मतिं देवां हिमवन्तं नगेश्वरं जगत्सु सत्र ततो देवीं विष्णुमाया प्रतुष्टुः। देवा उवाच। ॐ जयन्ती मङ्गलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वाहा स्वदा नमोऽस्तु ते। ॐ नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियता प्रणता स्मृतां रौद्रायै नमो नित्यायै गौर्यै धात्र्यै नमो नमः। ज्योत्स्नायै चन्द्ररूपिण्यै सुखायै सततं नमः। कल्याण्यै प्रणतां वृद्धे सिद्ध्यै कुर्मो नमो नमः। नैऋत्ये भ्रुभुता लक्ष्मे शर्वाण्यै ते नमो नमः। दुर्गायै दुर्गपारायै सारायै सर्वकारिण्ये ख्यात्यै तथैव कृष्णायै धूम्रायै सततं नमः। अतिसौम्यातिरौद्रायै नतासस्मै नमो नमः। नमो जगत्प्रतिष्ठायै देव्यै कृत्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शब्दिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु चैतन्येतदभिधीयते नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु क्षुधारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु छायारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु तृष्णारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु क्षान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु जातिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लज्जारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः।
या देवी सर्वभूतेषु कान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु वृत्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु स्मृतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु तुष्टिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु भ्रान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी नमस् इन्द्रियाणामधिष्ठार्ति भूतानां चाखिलेषु या भूतेषु सततं तस्मै व्याप्त्यै देव्यै नमो नमः। चीतिरूपेण या कृत्या मे सद्व्यापिता स्थितं जगते नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सुतासुरै पूर्वमभीष्ट संशयात्तदा सुरेन्द्रेण दिनेषु सेविता करोतु सा नः शुभहेतुरीश्वरी शुभानि भद्राण्यभिहन्तु चापदः। यां साम्प्रतं चोद्यता दैत्यातापि तैरस्मान् विरशाय सुरै नमस्कृते या च स्मृता तत्क्षणमेव हन्तिना सर्वोपदो भक्ति विनम्रमूर्तिभिः। ऋषिरुवाच जयन्ती मङ्गलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वाहा स्वदा नमोऽस्तुते। एवं स्तवाभियुक्तानां देवानां तत्र पार्वती स्नातुमाभ्याययौ स्तोये जाह्नव्या नृपनन्दना। साभ्रावित्यान्सुरान्सु भ्रवद्विस्तूतयेत्र ताका शरीरकोशतस्यास्यां समुद्भूता ब्रवीचिवा। स्तोत्रं ममैतत् क्रियते शुम्भदैत्यै निराकृतैः देवैः समैत्यै समरे निशुम्भेन पराजितैः शरीरकोशाद्यतस्या पार्वत्या निस्तृताम्बिका कौशिकीति समस्तेषु ततो लोकेषु गीयते। तस्यां विनिर्गतायां तु कृष्णा भूत्सापि पार्वती तस्यां कालिकेति समाख्याता हिमाचलकृताशया। ततोऽम्बिका परं रूपं बिभ्राणं सुमनोहरं ददर्श चण्डो मुण्डश्च वृत्तौ शुम्भनिशुम्भयोः। ताभ्यां शुम्भाय चाख्याता सातीव सुमनोहरा। काप्यास्ते श्रीमहाराजा भासयन्ती हिमाचलं नैव तादृकं कचिद्रूपं दृष्ट्वा केनचिदुत्तमं ज्ञायता काप्यतौ देवी गृह्यतां चासुरेश्वरा। श्रीरत्नमति चार्वङ्गी द्योतयन्ती द्विषस्तिषा सा तु तिष्ठन्ति दैत्येन्द्र तां भवान् द्रष्टुर्महति। यानि रत्नानि मणयो गजाश्वादीनि वै प्रभो त्रैलोक्यते समस्तानि साम्प्रतं भान्ति ते गृहे। ऐरावतः समानीतो गजरत्नपुरन्दरात् पारिजाततरुश्चाया तथैवोच्चैश्रवायहयः विमानं हंससंयुक्ता मे तत्तिष्ठन्ति ते गणे रत्नभूतमहानीतं यदासीद्वेदु सोद्भुतं निधिरेश महापद्मा समानीतो धनेश्वरा। किञ्जल्किनी ददौ चाब्दी माल्या आम्लपङ्कजां चत्रन्ते वारुणं गेहे काञ्चनस्रावि तिष्ठति तथायं स्यन्दनो वरो यः पुरा स्त्रीप्रजायते मृत्योरुताञ्चिदा नाम शरीरीशा त्वया वृता।
पाशसलीलराजस्य भ्रातुस्तवपरिग्रहे निशुम्भस्ताभिजातश्च समस्ता रत्नजायता वह्निरपि ददौ तुभ्यमग्निशौचे च वाससि एवं दैत्येन्द्ररत्नानि समस्त्यानाहृतानि ते श्रीरत्नमेष कल्याणी त्वया कस्मान्या गृह्यते। ऋषिर्वाच ॐ जयन्ती मङ्गला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वाहा स्वदा नमोऽस्तु ते। निशम्येति वचः शुम्भ स तदा चण्डमुण्डयोः प्रेषयामास सुग्रीवं दूतं देव्या महासुरम् इति चेति च वक्तव्या सा गत्वा वचनान् मम यथा चाभ्येति सम्प्रीत्या तथा कार्यत्वया लघु सा तत्र गत्वा यत्रास्ते शैलोद्देशेति शोभने तां च देवी ततः प्रक्ला शुक्ला मधुरा गिरा दूत उवाच जयन्ती मङ्गला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वाहा स्वदा नमोऽस्तु ते। देवी दैत्येश्वरः शुम्भैस्त्रैलोके परमेश्वरः दूतोऽहं प्रेषितस्तेन त्वत्सकाशामिहागतः अव्याहत्याज्ञः सर्वासुः य सदा देवयोनिषु निर्जिता किल दैत्यारिः सा यदाह शृण्वष्टत्तत् मम त्रैलोक्यमखिलं मम देवावशानुगाः यज्ञभागानहं सर्वानुपाश्नामि पृथक् पृथक् त्रैलोक्ये वररत्नानि मम वश्यानशेषतः तथैव गजरत्नं च हृतं देवेन्द्रवाहनं क्षीरोदमतनोद्भूतमश्वरत्नं ममामरैः उत्स्रैश्रव संसज्ञा तत्प्रणीपत्य समर्पितं यानि चान्यानि देवेषु गन्धर्वेषु रगेषु च रत्नभूतानि भूतानि तानि मय्येव शोभने श्रीरत्नभूतां त्वां देवी लोके मन्यामहे वयं सा त्वमस्यान्मुपागच्छ यतो रत्नभुजे वयं मां वा ममानुजं वापि निशुम्भामुरुविक्रमं भज त्वं चञ्चलापाङ्गी रत्नभूतानि वैयतः परमैश्वर्यमतुलं प्राप्यते मत्परिग्रहाते एतद्भुता समालोच्य मत्परिग्रहतां व्रजा। ऋषिरुवाच ॐ जयन्ती मङ्गला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वाहा स्वदा नमोऽस्तु ते। इत्युक्ता सा तदा देवी गम्भीरान्तास्मितौ जगौ दुर्गा भगवती भद्राययेदं धार्यते जगते। देव्यो उवाच जयन्तं देवी चामुण्डी जय भूतार्तिहारिणी जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमोऽस्तु ते। सत्यमुक्तं त्वया नात्रा मिथ्या किञ्चित् त्वयोदितं त्रैलोक्याधिपतिः शुम्भो निशुम्भाश्चापि तादृशः किं त्वत्र यत्प्रतिज्ञाता मिथ्या तत्क्रियते कथं श्रूयतामल्पबुद्धि त्वात् प्रतिज्ञाया कृता पुरा यो मां जयति संग्रामे यो मे दर्पं व्यपोहति यो मे प्रतिफलो लोके स मे भर्ता भविष्यति तदा गच्छन्तु शुम्भोऽत्र निशुम्भो वा महाबलः मां जित्वा किं चिरेत्रणात्र पाणिं गृह्णातु मे लवो दूत उवाच ॐ जयन्ती मङ्गला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वाहा स्वदा नमोऽस्तु ते। अवलिप्तासि मैवं त्वं देवी भूहि ममाग्रतः त्रैलोक्यैकः पुमांसिष्टे अग्रे शुम्भनिशुम्भयोः अन्वेषामपि दैत्यानां सर्वे देवानवैयुधि तिष्ठन्ति सम्मुखे देवी किं पुनः स्त्री त्वमेकिना इन्द्राद्यास सकला देवास्तस्तु येष्या सा संयुगे शुम्भादीनां कथं तेषां स्त्री प्रयासस्य सम्मुखम् सा त्वं गच्छ
उपोक्ता पार्श्वं शुम्भनिशुम्भयोः केशाकर्षणनिर्धूता गौरवमागमिष्यति। देव्योवाच ॐ जयन्ती मङ्गला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वदा नमोऽस्तु ते। एवमेतद्बली शुम्भो निशुम्भाश्चापि तादृशः किं करोमि प्रतिज्ञा मे यदा नालोचिता पुरा सत्वं गच्छ मयोक्तन्ते यदेत्सर्वमाद्यतः तदा चक्ष्वा सुरेन्द्राय सा च युक्तं करोत् ते। ॐ स्वस्ति श्री मार्काण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी महात्म्ये देव्या दूता संवादो नाम पञ्चमोऽध्यायः। श्रीजगदम्बार्पणमस्तु। अथ षष्ठोऽध्यायः ध्यानम्। ॐ नागदीश्वरविष्टरां पणिपणोत्तरां सोरुरत्नावली भास्वदेहलतां दिवाकरनिभां नेत्रत्रयोद्भासितां मालाकुम्भकपालनीरजकरां चन्द्रार्धचूडां परा सर्वैघ्नेश्वरभैरवाङ्कनिलयां पद्मावती चिन्तये। ॐ ऋषिरुवाच ॐ जयन्ती मङ्गला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वदा नमोऽस्तु ते। इत्याकर्णवचोद्देव्या सा दूतो मर्षपूरितः समाचष्ट समागम्य दैत्यराजाय विस्तरात्। तस्य दूतस्य तद्वाक्य मा कर्ण्यासुरराट्ततः सक्रोधः प्राह दैत्यानामधिपा धूम्रलोचनं हे धूम्रलोचना नाशु त्वं स्वसैन्या परिवारिता तामानया बला दृष्ट्वा केशाकर्षणविह्वलां तत्परित्राणदः कश्चिद्यद्दिवोत्तिष्ठन्ते परा सा हन्तव्यो मरो वापि यक्षो गन्धर्व एव वा। ऋषिरुवाच ॐ जयन्ती मङ्गला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वदा नमोऽस्तु ते। तेनाज्ञा प्रस्तता शीघ्रं सा दैत्यो धूम्रलोचनः वृता सृष्टा सहस्राणामसुराणां द्रुतं ययौः। सा दृष्ट्वा तां ततो देवी तुहिनाचलसंस्थितां जगद्दोच्चै प्रयाहीति मूलं शुम्भनिशुम्भयोः नाचेत्प्रीत्याद्या भवति मद्भर्तारमुपैष्टति ततो बलान्नयामेष्टा केशाकर्षणविह्वलां। देव्यो उवाच ॐ जयन्ती मङ्गला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वदा नमोऽस्तु ते। दैत्यैश्वरेण प्रहितो बलवान् बलसंवृतः बलान्नयसि मामेवं तः किं ते करोम्यहं। ऋषिरुवाच जयन्तं देवी चामुण्डी जय भूतार्तिहारिणी जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमोऽस्तु ते। इत्युक्ता सोऽभ्यधावता मसुरो धूम्रलोचनः हुङ्काराणैव त्वं भस्म सा चकाराम्बिका तदा अत क्षुब्धमहासैन्यामसुराणां तथाम्बिका ववर्षसायकैः सिक्ते तथा शक्तिपरैश्वधैः ततो दुतसटा कोपात् कृपां नाथं सुभैरवां पपातासुरसेनायां सिंहो देव्या स्ववाहनः काश्चित्करप्रहारेण दैत्यानासेन चापराम् आक्रान्ता चादरेण न्याघना सा महासुरां केषाञ्चित् पाटयामास न कैकोष्ठानि केसरी तथा तलप्रहारेण शिरांसि कृतवान् पृथक् विचिन्न बाहुशिरसा कृतास्तेन तथा परे पपौ चारुदिरं कोष्ठा धन्येशा दुतकेसरः क्षणेन तद्बलं सर्वा क्षयं नीतं महात्मना तेन केसरिणा देव्या वाहनेनातिकोपिना श्रुत्वा तमसुरं देव्या निहतं धूम्रलोचनं बलं चाक्षयितं देवी केसरिणा तथा चुकोपदैत्याधिपतिः शुम्भप्रस्फुरिताधरः आज्ञापयामास च तौ चण्डमुण्डौ महासुरो हे चण्ड हे मुण्डा बलैर्बहुभिः परिवारितौ तत्र गच्छत गत्वा च सा समानीयता लगो
श्चेष्टाकृष्णबद्ध्वा वा यदि वः संशयो युधि तदा शेषायुधै सर्वैरसुरैर्विनिहन्यतां तस्या हतायं दृष्ट्वा यां सिंहे च विनिपातिते शीघ्रमागम्यता बद्ध्वा गृहीत्वां तामताम्बिकाम् ॐ स्वस्ति श्री इति श्रीमार्काण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्मथे देवी महात्म्ये शुम्भनिशुम्भो सेनानी धूम्रलोचनवधो नामः षष्ठोऽध्यायः। ॐ श्रीजगदम्बार्पणमस्तु। अथ सप्तमोऽध्यायः ध्यानम्। ॐ ध्यायेयं रत्नपीठे शुककलशपठितं शृण्वन्ति श्यामलाङ्गीं न्यस्यैकाङ्घ्रि सरोजशशिकलाधरां वल्लकीं वादयन्तीं कल्लारबद्धमालां नियमितविलसच्चोलिकां रक्तवस्त्रां मातङ्गीं शङ्खपात्रा मधुरमधुमदां चित्रकोद्भासिबालाम् ॐ ऋषिरुवाच जयन्ती मङ्गला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वाहा स्वदा नमोऽस्तु ते। अग्नापास्ते ततो दैत्या चण्डमुण्डा पुरोगमाः चतुरङ्गबलोपेता युरभ्युद्यातायुधाः ददृशुस्तो ततो देवी मिष्टदांसां व्यवस्थितां सिंहोऽस्योपरि शैलेन्द्र शृङ्गे महति काञ्चने ते दृष्ट्वां त्वां समादातुमुद्यं चक्रुरुद्यताः आकृष्टचापासिधरा स्तार्थान्यै तत्समीपगाः ततः कोपं चकारोच्चैरम्बिका तानरीन् प्रतिं कोपेन चास्य वदनं मषीवर्णमभूत्तदा भ्रुकुटी कुटिला तस्या ललाट पलकाद्रुमं काली करालवदना विनिष्क्रान्ता सिपाशिनी विचित्रखड्गधरा नरमाला विभूषणा द्वीपी चर्म परिधाना शुष्कमांसातिभैरवा अतिविस्तारवदना जिह्वाललनभीषणा निमग्ना रक्तनयना नादपूरितदिङ्मखा सा वेगेनाभिपतिता घातयन्ती महासुरं सैन्ये तत्र सुरारीणामभक्षयता तद्बलं पाष्णिग्राहाङ्कुशग्राहि योधघण्टा समन्वितां समादायैकहस्तेन मुखे चिक्षेपवारणान् तथैव योधं तुरगै रथं सारथिना सह निक्षिप्तवक्ते दशनैश्चर्व यत्यन्तति भैरवम् एकं जग्राहकेशेषु ग्रीवयामात चापरं पादेनाक्रम्य चैवान्या मुरस्यान्यामपोथयते त्रैमुक्तानि च शस्त्राणि महास्त्राणि तथासुरै मुखेन जग्राहरुषा दशमैर्मर्दितान्यपि बलिना तद्बलं सर्वमसुराणां दुरात्मनां ममर्दा भक्तयश्चान्यांश्च ताडयत्तदा असीना निहतां केचित् केटित्कटाङ्गा कट्कट्टाङ्गताडिताः जग्मुर्विनाशमसुरा दन्ताग्राभिहतस्तदा क्षणेन तद्बलं सर्वमसुराणां निपातितं दृष्ट्वा चण्डोऽभिदुद्राव तां कालीमतिभीषणाम् शरवर्षैर्महाभीमै भीमाक्षी त्वां महासुरा चादयामास चक्रैश्च मुण्डः क्षिप्तैः सहस्रशः तानि चक्राण्यनेकानि विषमानानि तन्मुखं बभूर्य ताकाबिम्बानि सुबोहानि गणोदरं ततो जहातिरिषुभा भीमं भैरवनादिनी काली करालवदना दुर्दर्शा दशनोज्ज्वला उत्थाय च महासिंह देवी चण्डमदावता गृहीत्वा चास्य केशेषु शिरस्ते नासिना चीनते अथ मुण्डोऽभ्यधावत्तं दृष्ट्वा चण्डं निपातितं तमप्यपात यद्भूमौ सा खड्गाभिहता रुषा हतशेषं ततः सैन्यं दृष्ट्वा चण्डं निपातितं मुण्डं च सुमहावीर्यो दिशो भेजे भयातुरम्
शिरश्चण्डस्य काली च गृहीत्वा मुण्डमेव च प्राह प्रचण्डाट्टहासा मिश्रमाभ्येत्य चण्डिकां मया तवात्रोपहृतौ चण्डमुण्डौ महापशो युद्धयज्ञे स्वयं शुम्भा निशुम्भा च हनिष्यति। ऋषिरुवाच जयन्ती मङ्गला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वाहा स्वदा नमोऽस्तु ते। तवानीतौ ततो दृष्ट्वा चण्डमुण्डौ महासुरौ उवाच कालीं कल्याणी ललितं चण्डिकावचः यस्माश्चण्डं च मुण्डं च गृहीत्वा त्वमुपागता चामुण्डेति तथा लोके ख्याता देवी भविष्यति। स्वस्तिस्ति श्री मार्काण्डेयपुराणे सूर्यसावर्णिके मन्वन्तरे देवी महात्म्ये चण्डमुण्डवधो नाम सप्तमोऽध्यायः। श्रीजगदम्बार्पणमस्तु। अथ अष्टमोऽध्यायः ध्यानम्। ॐ अरुणा करुणा तरङ्गिताक्षी धृतपाशाङ्कुशबाण चापहस्ताम् अणिमादिभिरावृतां मयूकैः अहमित्येव विभावये भवानीम्। ॐ ऋषिरुवाच जयन्ती मङ्गला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री कालरात्रि नमोऽस्तु ते। चण्डे च निहते दैत्ये मुण्डे च विनिपातिते बहुलेषु च सैन्येषु क्षयितेश्वर सुरेश्वर ततः कोपपराधीना चेताः शुम्भप्रतापवान् उद्योगं सर्वसैन्यानां दैत्यानामादिशेः। अद्य सर्वबलैदैत्यां षडशीतिरुदायुधाः कम्बूना चतुरशीति निर्यान्तु स्वबलैर्वृताः कोटिवीर्याणि पञ्चाशदसुराणां कुलानि वै शतं कुलानि धौम्राणां निर्गच्छन्तु मयाज्ञया। कालका दौहृद्या मौर्या कालिकेया सतासुराः युद्धाय सज्जा निर्यान्तुम् आज्ञया त्वरिता मम। इतज्ञाप्यासुरपतिं शुम्भो भैरवशासन निजर्गाम महासैन्य सहस्रैर्बहुर्विवृताः। आयान्तं चण्डिका दृष्ट्वा तत्सैन्यमतिभीषणां ज्यास्वनै पूरयामास धरणी गगनान्तरां। ततः सिंहो महानादा मतीवा हृतवान् कृपा घण्टास्वनेन तन्नादाम्बिका चोप्य बृहं यते धनुर्जा सिंहघण्टाना नादपूरित दिङ्मुखा निनादै भीषणै काली जिह्वे विस्तारितानना तं निनादमुपश्रुत्य दैत्यसैन्यैश्चतुर्दिशं देवी सिंह तथा काली स्वरोषै परिवारिताः। एतस्मिन्नन्तरे भूप विनाशाय सुरदिशां भावयामरसिंहाना मती वीर्याबलान्विता ब्रह्मेश गुहविष्णूनां तथेन्द्रस्य च शक्तयः शरीरेभ्य विनिष्क्रम्य तद्रूपै चण्डिकायुः यस्य देवस्य यद्रूपं यथा भूषणवाहनं तद्वन्देहि तच्चक्ति रसूरान्योद्युमाययौ हंसयुक्तविमानाग्रे साक्षात् सूत्रकमण्डलोः आयाता ब्रह्मणशक्ति ब्रह्मानीत्याभिधीयते। माहेश्वरी वृषारूढा त्रिशूला वरधारिणी महाहिवलया प्राप्ता चन्द्ररेखा विभूषिणा कौमारी शक्तहस्ता च मयूरा वरवाहना योद्धुमाभ्याययो दैत्या अम्बिका गुहरूपिणी तथैव वैष्णवी शक्ति गरुडोपरि संस्थिता शङ्खचक्रगदा शाङ्गा खड्गा हस्ताभ्युपाययोः यज्ञवाराः मतुलं रूपं या बिभ्रतो हरेः शक्तिः साप्याययौ तत्र वाराहीं बिभ्रतीतनं नारसिंही नृसिंह
किमस्य बिभ्रति सदृशं वपुः प्राप्ता तत्र सटाक्षेपक्षिप्तनक्षत्रसंहते वज्रहस्ता तथैवेन्द्री गजराजोपरि संस्थिता प्राप्ता सहस्रनयना यथा शक्रस्तथैव सा ततः परिवृतास्ताभिरेषा नो देवशक्तिभिः हन्यतामसुरां शीघ्रा मम प्रीत्याह चण्डिकां ततो देवी शरीरास्तु विनिष्क्रान्ता बिभीषणा चण्डिका शक्तिरुत्यग्रा शिवा शतानिदानिदानिनी सा चाह धूम्रजटिला मेषानामपराजिता दूतत्वं गच्छ भगवान् स्पाश्यां शुम्भनिशुम्भयोः ब्रूहि शुम्भं निशुम्भा च दानवारतिगर्वितौ ये चान्ये दानवास्तत्र युद्धाय समुपस्थिता त्रैलोक्यमिन्द्रो लभतां देव्या सन्तो हविर्भुजः युयोपायातपातालं यदि जीवितुमिच्छतः बलावलेपदाता चेद्भवन्तो युद्धकाङ्क्षिणः तदा गच्छन्तु तृप्यन्तो मच्छिवा विशितेन वा यतो निर्युक्तो दौत्येन तया देव्या शिवस्वयं शिवदूतेति लोकेऽस्मिन् सतः सा ख्यातिमागता तेऽपि श्रुत्वा वचो देव्या शर्वाख्याता महासुरः अमर्ष्या पूरिता जग्मु यत्र कात्यायनी स्थिता ततः प्रथममेवाग्रे शरशक्दोष्टिव्यक्तिभिः ववर्षुरुद्धतामर्षास्ता देवी ममरारयः सा च तान् प्रहितान् प्राणा शूलशक्तिपरश्वदान् चिच्चेदलीलयाद्वाता धनुर्मुक्तै महेशुभिः तस्य ग्रतास्तथा काली शूलपाता विदारितान् कट्वाङ्गपोतिताश्चारिन् कुर्वन्ति व्यचरत्तदा कमण्डलु जलाक्षेपा हतवीर्यान् तौजसः ब्रह्माणि चाकरोच्चत्रूण्यैव येन स्मधावति माहेश्वरी त्रिशूलेन तथा चक्रेण वैष्णवी दैत्याङ्गजङ्गान् कौमारी तथा शक्तातिकोपिना ऐन्द्रीकुलिशपातेन शतसो दैत्यदानवाः प्रेतुर्विदारिता कृत्वा रुधिरौघ प्रवर्षिणः तुण्डप्रहारविद्वंसाः द्रंष्टाग्राक्षतवक्षसाः वाराहमूर्त्या नृपतंश्चक्षेण च विदारिताः नखैर्विदारितांश्चान्या भक्षयन्ति महासुरं नारसिंही चचाराजौ नादपूर्णदिगम्बरा चण्डाट्टहासैसुरा शिवदूत्याभिदूषिता पेतुः पृथिव्यापति तां स्ताश्चाखादता सा तदा इति मातृगणं क्षुद्रं मर्दयन्तं महासुरं दृष्ट्वा भूयोपाये विविधैन्ये श्रुदैवारिसैनिका पलायनपरां द्रष्टा दैत्यान् मातृगणादितान् योद्धुमाभ्यययौ क्षुद्रो रक्तबीजो महासुराः रक्तबिन्दुर्यदा भूमौ पतितस्य शरीरतः समुत्पत्तति मेदिन्या तत्प्रमाणो महासुरः युधे स गदापाणिरीन्द्रशक्त्या महासुरा ततश्चैन्द्री स्वयज्रेण रक्तबीजामताडयते कुलिशेन हतस्याशु बहुशुश्रावशोणितं समुद्यस्तु ततो योधा स्ताद्रूपा सत्पराक्रमाः यावतः पतिता तस्य शरीराद्रक्तबिन्दवः ते चापि युधस्तस्ता पुरुषा रक्तसम्भवाः तावन्ता पुरुषा जाता सद्विद्वीर्यबलविक्रमाः समं मातृभिरत्युग्धा शस्त्रपातातिभीषणं पुनश्च व्रजपातेन क्षत्रमस्य शिरो यदा ववाहरक्तं पुरुषा सक्तो जाताः सहस्रशः वैष्णवी समरे चैन चक्रेणाभिजगानः गदया ताडयामास ऐन्द्रीतमसुरेश्वरं वैष्णवी चक्रभिन्नस्य रुधिरास्रावसम्भवैः
सहस्रशो जगद्व्याप्तं तत्प्रमाणै महासुरै शक्त्या जगान कौमारी वाराही च तथासिना माहेश्वरी त्रिशूलेन रक्तबीजं महासुरं स चापि गदया दैत्या सर्वा एवाहनत्पृथक् मातः कोपसमाविष्टो रक्तबीजो महासुरः तस्य हतस्य बहुधा शक्तिशूलादिभिर्भुवि पपातयो वैरक्तौ घस्तेन सहिताशो सुराः तैश्चासुरसकृतभूतैरसुरैः सकलं जगते व्याप्तामासि ततो देवा भयमा जग्मुरुत्तमं तान् विषण्मानुरादृष्टा चण्डिका प्राह सत्परा उवाच काली चामुण्डे विस्तीर्णं वदनं कुरु मध्यस्त्रपातसम्भूता रक्तबिन्दुन्महासुरान् रक्तबिन्दो प्रतित्यक्त्वा वक्रेणानेन वेगिना भक्षयन्ति चरारणे तद्युत्पान् महासुरान् महासुरान् एवमेष क्षयं दैत्या क्षीणो रक्तो गमिष्यति भक्षमाणा स्वया चोग्रा न चोत्पत्तिं चापरे इत्युक्तां ततो देवी शूलेनाभिजगानतं मुखेन काली जगृहे रक्तबीजस्य शोणितम् ततो सा वा जगानाता गदया तत्र चण्डिकां नात्यास्या वेदानां चक्रे गदा पातोल्बिकामपि तस्याः तस्य देहात्तु बहु शुश्रावशोणितं यतस्तत्र सद्भक्षेण चामुण्डा सम्प्रतीच्यते मुखे समुद्गता येस्त्या रक्तपातान् महासुराः ताश्च कादात चामुण्डा पपौ तस्य च शोणितं देवी शूलेन वज्रेण बाणैरसिभिः जगान रक्तबीजं त्वं चामुण्डा पीतशोणितं स पपात महीपृष्ठे शस्त्रसङ्गसमाहतः निरक्तश्च महीपाला रक्तबीजो महासुरः ततस्ते हर्षमतुलामा वाप्रुस्त्रीदशा नृपा तेषां मातृगणो जातो नन्दता गणाद्योद्धतः ॐ स्वस्ति श्री इति श्रीमार्काण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी महात्म्ये रक्तबीजवधो नाम अष्टमोऽध्यायः श्रीजगदम्बार्पणमस्तु। अथ नवमोऽध्यायः ध्यानम् ॐ बन्धूककाञ्चननिभं रुचिराक्षमालां पाशाङ्कुशौ च वरदां निजबाहुर्दण्डैः बिभ्राणमिन्दुशकलाभरणतिनेत्रमर्दाम्बिकेश मनिशं वपुराश्रयामि। ॐ राजोवाच ॐ जयन्ती मङ्गला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वाहा स्वदा नमोऽस्तु ते। विचित्रमिदमाख्यातं भगवान् भवता मम देवाश्चरित्रमाहात्म्यं रक्तबीजावदायि वदाश्रितं भूयेश्चेश्चाम्यह्यं श्रोतुं रक्तबीजे निपातिते चकार शुम्भो यत्कर्म निशुम्भाश्चापि कोपिनः। ऋषिरुवाच जयन्ती मङ्गला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वाहा स्वदा नमोऽस्तु ते। चकार कोपमतुलं रक्तबीजे निपातिते शुम्भासुरो निशुम्भश्च आहतेष्टन्वेषु बाहवे हन्यमानं महासैन्यं विलोक्यामर्षमद्वहन् अभ्यधावनिशुम्भोऽथ मुख्यया सुरसेनया तस्याग्रतस्तथा पृष्ठे पार्श्वयोश्च महासुराः सन्दष्टौ श्रुद्रा हन्तुं देवीमुपाययोः अजगाम महावीर्या शुम्भोऽपि स्वबलैर्वृता निहन्तु चण्डिका कोपा कृत्वा युद्धं तु मातृभिः।
ततो युद्धमतीवासीद्देवा शुम्भनिशुम्भयोः शरवर्षमतीवोग्रं मेघयोरिव वर्षतोः चिच्चेदास्तारास्ताभ्या चण्डिका श्वशरोत्करे ताडयामास चाङ्गेषु शस्त्रौ घैरै सुरेश्वरौ निशुम्भो निशितं खड्गं चर्माचादाय सुप्रभम् आताडयन्मूर्धिं सिंहं देव्या वाहनमुत्तमं ताडिते वाहने देवी क्षुरप्रेणासिमुत्तमं निशुम्भस्याभुचिच्चेद चर्मं चाप्यष्टचन्द्रकं चिन्ने चर्मणि खड्गे च शक्तिं चिक्षेपसोऽसुराः तामपस्य द्विधा चक्रेणाभिमुखा गतां कोपाद्यात्तो निशुम्भोता शूलं जग्राह दानवा आयान्तमुष्टिपातेन देवी तच्चाप्यचूर्णयते अविद्यातगदां सोऽपि चिक्षेपा चण्डिकां प्रति सापि देवास्त्रिशूलेन भिन्ना भस्मात्वमागता ततः परशुहस्तं तमायान्ता दैत्यपुङ्गवम् आहत्य देवी बाणौघै पातयता भूतले तस्मिन्निपतिते भूमं निशुम्भे भीमविक्रमे भ्रातयर्तीव संक्षुद्रं प्रयायौ हन्तुमम्बिकाम् सरतस्तदातुर्चैग्रैः गृहीतो परमायुधैः भुजैरश्माभिरतुलैर्वाप्याशेषं भवौ नभः तमायान्तसमालोक्य देवी शङ्खमावादयते ज्याशब्दचापि धनुष्याकारातीव दुस्सहं पूरयामास ककुभो निजघण्टास्वनेन च समस्तदैत्यसैन्यानां तेजोवधविदायिना ततः सिंहमहानादैस्ताजिते महामध्ये पूरयामास गगनं गां तथैव दिशो दश ततः कालिसमुत्थित्य गगनं क्षामताडयते कराभ्यां तान्निनादेन प्राक्स्यान्नास्ते शिरो तिरोहिताम् अट्टाटहासमशिवं शिवदूती चकारः तैः शब्दैरसुरास्त्रेषु शुम्भं कोपं परं ययो दुरात्मस्तिष्ठतिष्ठेति व्याजहाराम्बिका यदा तदा जयेत्यभिहितं दये देवैराकाशसंस्थितैः शुम्भेनागत्य या शक्ति मुक्ता ज्वालातिभीषणा आयान्ति वह्निकूटाभा सा विनिरस्ता महोल्कया सिंहनादेन शुम्भस्ता व्याप्तं लोकत्रयान्तरं निर्घातनिस्वनो घोरे जितवानवनीपते शुम्भमुक्ताञ्जरान् देवी शुम्भस्तत्पाहिताञ्जरान् चिच्चेदस्पशरैरुग्रै शतशोथः सहस्रशः ततः सा चण्डिका क्षुद्रा शूलेनाभिजगानतं तदा विहतो भूमौ मूर्छितो निपपातः ततो निशुम्भसम्प्राप्त्य चेतनामात्तकार्मुकः अजगानशरै देवीं कालीं केसरिणं तथा पुनश्च कृत्वा बाहुना मयुतं धनुजेश्वरः चक्रायुधेन दितिजाश्वाद्ययामास चण्डिकां ततो भगवती क्षुद्धा दुर्गा दुर्गतिनाशिनी चिच्चेददेवी चक्राणि स्वशरैः सायकांशतान् ततो निशुम्भो वेगेन गदमादाय चण्डिकाम् अभ्यधावत वै हन्तो दैत्यसेना समावृतः तस्यापतत एवाशु गदां चिच्चेद चण्डिका खड्गेन शितधारेण सा च शूलं समाददे शूलहस्तं समायान्ता निशुम्भामारार्दनं हृदि विवाद्य शूलेन वेगविद्येन चण्डिका भिन्नस्य तस्य शूलेन हृदयान्निवृतोपराः महाबलो महावीर्यास्तिष्ठन्ति पुरुषो वदन् तस्य निष्क्रामतो देवी प्रहस्त स्वनवत्ततः शिरश्चिच्चेद खड्गेन ततो सावपतद्भुवि ततः सिंहश्चरका दोग्रद्रंष्टा कुण्डशिरोधरान् असुरांस्ता तथा काली शिवदूती तथा परान् कौमारी शक्ति निर्भिन्ना केचिन्नेषु महासुरा ब्रह्माणि मन्त्रपूतेन
तोयेनाने निराकृतः माहेश्वरी त्रिशूलेन भिन्नाः पेतुस्तथा परे वाराहि तुण्डगातेन केचिच्चूर्णीकृती भुवि खण्डं खण्डं च चक्रेण वैष्णव्या दानवा कृताः वज्रेण चैन्द्रिहस्ताग्रा विमुक्तेन तथा परे केचिद्दिनेषुरासुरा केचिन्नष्ट्वा महाहवात् भक्तिश्च परे काली शिवदूती मृगाधिपै ॐ स्वस्तिश्री इति श्रीमार्काण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी महात्म्ये निशुम्भवधो नाम नवमोऽध्यायः। ॐ श्री जगदम्बार्पणमस्तु। अथ दशमोऽध्यायः ध्यानम्। ॐ उत्पत्तहेमरुचिरां रविचन्द्रवह्निनेत्रां धनुश्चरयुतान्तकुशपाशशूलं रम्यै भुजैश्च ददन्तीं शिवशक्तिरूपां कामेश्वरीं हृदीं भजामि धृतेन्दुलेखाम्। ॐ ऋषिरुवाच जयन्ती मङ्गला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वाहा स्वदा नमोऽस्तु ते। निशुम्भनिहतां दृष्ट्वा भ्रातरं प्राणसंहितं हन्यमानं बलं चैव शुम्भक्षुद्रोर्भविद्वचः बलाबलेव दृष्टे त्वं मां दुर्गे गर्वमावह अन्यसा बलमाश्रित्य युदेशे जातिमानिनी। देव्योवाच जयन्ती मङ्गला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वाहा स्वदा नमोऽस्तु ते। एकैवाहं जगत्यत्र द्वितीया का ममापरा पश्येत्या दृष्टमय्यैव विशन्तो मद्विभूतयः ततः समस्तास्या देव्यो ब्रह्माणि प्रमुखालयं तस्या देव्यास्तनौ जग्मु रेकै वासितं ताम्बिका। देव्यो उवाच जयन्ती मङ्गला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री कालरात्रि नमोऽस्तु ते। अहं विभूत्या बहुभिरिव रूपैर्यदा स्थिता तत्सहृतं मयैकैव तिष्ठाम्याजौ स्थिरो भव। ऋषिरुवाच जयन्ती मङ्गला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वाहा स्वादा नमोऽस्तु ते। ततः प्रववृते युद्धं देव्या शुम्भस्तचोभयोः पश्यतां सर्वदेवा नामसुराणां च दारुणं शरवर्षे शिते शस्त्रे सता चास्त्रे सुदारुणे तयो युद्धमभूद्धूर्या सर्वलोकभयङ्करं दिव्यानस्त्राणि शतशो मुमुचेयान्यथाम्बिका बभञ्जतानि दैत्येन्द्र सत्रतिर्घातकृतृभिः मुक्तानि तेन शास्त्राणि दिव्यानि परमेश्वरी बभञ्जलीलयोग्रा हुङ्कारोच्चारणादिभिः ततश्यरत शतै देवी माच्चादयता सोऽसुरं सापि तत्कुपिता देवी धनुश्चिच्छेदचे चेषुभिः छिन्ने धनुषि दैत्येन्द्र सदा शक्तिमथा ददे चिच्छेद देवी चक्रेण तामपस्य करे स्थितां ततः खड्गमुपादाय शतचन्द्र च भानुमते अभ्यधावत तां देवी दैत्यानमधिपेश्वरः तस्या पतत एवाशु खड्गं चिच्छेद चण्डिका धनुर्मुक्ते शितैर्बाणै शर्म च कर्करामलम् आश्चाश्च पातयामास रथं सारथिना सह हताश्वसा तथा दैत्या छिन्नधन्मा विसारथि जग्राहमुद्गरं घोर अम्बिका निधनोद्धृता चिच्छेदपतपतस्य मुद्गरं निशितैशरैः तथापि सोऽभ्यधावत्
मध्यमवेगवान् सा मुष्टिपातयामास हृदये दैत्यपुङ्गवः देवास्तं चापि सा देवी तलेनोरस्य ताडयते तलप्रहाराभिहतो निपपाता महीतले सा दैत्यराजः सहसा पुनरेव ततोत्थितः उत्पत्य च प्रगृहोच्चै देवीं गगनमास्थिताः तत्रापि सा निराधारा यूदे तेन चण्डिका नियुद्धं के तदा दैत्याश्चण्डिका च परस्परं चक्रतु प्रथमं सिद्धा मुनिविस्मयकारकं ततो नियुद्धसुचिरं कृत्वा तेनाम्बिके सह उत्पाद्य भ्रामयामास चिक्षेपधरणीतले सक्षिप्तो धरणी प्राप्ता मुष्टिमुद्यमवेगवान् अभ्यधावत दुष्टात्मा चण्डिका निधनेच्छया तमायान्तं ततो देवी सर्वदैत्यजनेश्वरं जगत्या पातयामास भित्त्वा शूलेन वक्षसि सगतासु पपातोर्वा देवी शूलाग्रवीक्षतः चालयत् सकला पृथ्वी साब्दीद्वीपा सपर्वतां ततः प्रसन्नमखिलं हते तस्मिन् दुरात्मनि जगत्सास्तमतीपावापा निर्मलं च भवन्नभः उत्पातमेघस्युत्कोल्या ये प्राग्रास्तस्ते शमं युयुः सरितो मार्गवाहिन्या सता संसृतपातिते ततो देवगणा सर्वे हर्षनिर्भरमानसाः बभूवावु निर्हते तस्मिन् गन्धर्वा ललितं जगुः अवादयंस्तथैवान्ये दद्रुतोश्चापरो गणाः ववुः पुण्यस्तथा वाता सुप्रभो दिवाकरः ॐ स्वस्ति स्त्री इति मार्काण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी महात्म्ये शुम्भवधो नाम 10मोऽध्यायः। ॐ श्री जगदम्बार्पणमस्तु। अथ 11 ध्यानम्। ॐ बालार विद्युतिमिन्दुकिरीटां तुङ्गकुचां नयनत्रययुक्तां स्मेरमुखीं वरदाङ्कुशपाशभीतिकरां प्रभजे भुवनेशीं ॐ ऋषिरुवाच जयन्ती मङ्गला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोऽस्तु ते। देव्या हते तत्र महासुरेन्द्रे सेन्द्रां सुरा वह्निपुरोगमास्तां कात्यायिनी तुष्टवुरिष्ट लाभाद्विकाशी वक्ताब्जा विकासिताशां देवी प्रपन्नातिहरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वं त्वमेश्वरी देवी चराचरस्य आधारभूता जगत् त्वमेका महीस्वरूपेण यतस्थितासि अपां स्वरूपस्थितया त्वयैत द्वाप्यायते कृत्समलङ्गवीर्ये त्वं वैष्णवी शक्तिरनन्तवीर्या विश्वस्य बीजं परमासि माया सम्मोहितं देवी समस्तमेतत् त्वं वै प्रसन्ना भुवि मुक्तिहेतुः विद्या समस्तास्तव देवी भेदा स्त्रिया समस्ता सकला जगत्सु त्वयैकया पूरितमम्बयेतत् का ते स्तुतिः स्तव परापोक्तिः सर्वभूत यदा देवी भुक्तिमुक्तिप्रदायिनी त्वं स्तुता स्तुतये का वा भवन्तु परमोक्तयः सर्वस्वबुद्धिरूपेण जनस्तहृदि संस्थिते स्वर्गापवर्गते देवी नारायणी नमोऽस्तु ते कलाकाष्ठादिरूपेण परिणामप्रदायिनी विश्वसौ परतो शक्ते नारायणी नमोऽस्तु ते सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तु ते
सृष्टिस्थितिविनाशानां शक्तिभूते सनातनी गुणाश्रये गुणमये नारायणी नमोऽस्तु ते शरणागतदीनार्थ परित्राणपरायणे सर्वस्यार्तिहरे देवी नारायणि नमोऽस्तु ते हंसयुक्तविमानस्ते ब्रह्माणि रूपधारिणि कौशम्बाक्षरिके देवी नारायणि नमोऽस्तु ते त्रिशूलचन्द्राहिधरे महावृषभवाहिनी माहेश्वरी स्वरूपेण नारायणी नमोऽस्तु ते मयूरकुक्कुटवृते महाशक्तिधरे नगे कौमारी रूपसंस्थाने नारायणी नमोऽस्तु ते शङ्खचक्रगदाशाङ्ग गृहीतपरमायुधे प्रसीद वैष्णवी रूपे नारायणी नमोऽस्ते गृहीतोग्रमहाचक्रे दंष्ट्रोद्धृतवसुन्दरे वराहरूपिणी शिवे नारायणी नमोऽस्तु ते नृसिंहरूपेणोग्रेण हन्तुं दैत्यानोतोद्यमे त्रैलोक्यत्राणसहिते नारायणी नमोऽस्तु ते किरीटिनी महाव्रजे सहस्रनयनोज्ज्वले वृताप्राणहरे चैन्द्री नारायणी नमोऽस्तु ते शिवदूती स्वरूपेण हतदैत्यमहाबले घोररूपे महारावे नारायणी नमोऽस्तु ते द्रंष्ट्राकरालवदने शिरोमाला विभूषणे चामुण्डे मुण्डमतने नारायणी नमोऽस्तु ते लक्ष्मील्लज्जे महाविद्ये श्रद्धे पुष्टि स्वदे ध्रुवे महारात्रि महामाये नारायणी नमोऽस्तु ते मेधे सरस्वती वरे भूति भाब्रवीतामसि नियते त्वं प्रसीदेशे नारायणी नमोऽस्तु ते सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्तिसमन्विते भयेभ्यस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोऽस्तु ते एतत्ते वदनं सौम्यं लोचनत्रयभूषितं पातु न सर्वभूतेभ्यः कात्यायनी नमोऽस्तु ते ज्वालाकरालमत्युग्रमशेष सुरसूदनं त्रिशूलपातु नो भीते भद्रकाली नमोऽस्तु ते हीनस्ति दैत्यतेजांसि स्वदेनाया पूर्या जगते सा घण्टा पातु नो देवी पापेभ्यो नासुतानि वा असुरा स्वगृहः सा पङ्कजचित्तसेत्करोज्ज्वलः शुभया खड्गो भवतु चण्डिके त्वां नता वयं रोगानशेषान् पंहंसि तुष्टान् रुष्टान् तु कामान् सकलान् अभीष्टान् त्वामाश्रितानां न विपन्नाराणां त्वामाश्रिता ह्यशयतां प्रयान्ति एतत् कृतं यत्कदनं त्वयाद्य धर्मद्विषा देवी महासुराणां रूपारनैका बहुदात्ममूर्ति कृत्वाम्बिके तत्प्रकरोति कान्या विद्यासु शास्त्रेषु विवेकदीपे स्वादेषु वाक्येषु च कात त्वधन्या ममन्त्वगतेति महान्धकारे बिभ्रामयत्येतीव तीव विश्वं रक्षांसि यत्रोग्र विश्वाश्च नागा यत्रारलो दस्युबलानि यत्र दावानलो यत्र तताब्धिमध्ये तत्रासितां त्वं परिपासि विश्वं विश्वेश्वरी त्वं परिपासि विश्वं विश्वात्मिका धारयेसीह विश्वं विश्वेशवन्द्या भवती भवन्ति विश्वाश्रये त्वयि भक्तिनम्राः देवी प्रसीद परिपालय नोरिभीते नित्यं यथासुरवधादुदनैव सद्यः पापानि सर्वजगतां प्रशमं नयाशु उत्पातपाकजनिताश्च महोपसर्गान् प्रणतां प्रसीद त्वं देवी विश्वार्तिहारिणी त्रैलोक्यवासनामीडे लोकानां वरदा भव देव्यो उवाच जयन्ती मङ्गला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वाहा स्वदा नमोऽस्तु ते वरदाहं सुरगणावरं यं मनस्तेश्च तं ऋणध्वं प्रयच्छामि जगतामुपकारकं देवा उवाच जयत्वीं देवी चामुण्डी जय भूतार्तिहारिणी जय सर्वगते देवी
कालरात्रि नमोऽस्तु ते सर्वबाधाप्रशमनं त्रैलोक्याखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यमस्मद्वैरिविनाशनं देव्यो उवाच जयन्ती मङ्गला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वाहा स्वादा नमोऽस्तु ते वैवस्वन्तरे प्राप्ते अष्टाविंशति मे युगे शुम्भो निशुम्भश्चैवान्या उत्पेते ते महासुरा नन्दगोपगृहे जाता यशोदा गर्भसम्भवा ततस्तौ नाशयिष्यामि विन्ध्याचलनिवासिनी पुनरप्यतिरौद्रेण रूपेण पृथिवीतले आवर्तिव्यहनिष्यामि वैप्रचिन्ताश्च दानवान् भक्तयन्ताश्च तानुग्रान् वैप्रचितान् महासुरान् रक्तदन्ता भविष्यन्ति दाडिमी कुसुमोपमा ततो मा देवता स्वर्गे मर्त्यलोके च मानवाः स्तुवन्तो व्याहरिष्टन्ति सततं रक्तदन्तिकां भूयश्च शतवार्षिक्या मानावृष्टामनुभम्भसि मुनिभिः संस्तुता भूमौ सम्भयिष्यामयो निजा ततशतेन नेत्राणां निरीक्ष्याम्यहं मुनीन् कीर्तयिष्यन्ति मनुजाः शताक्षीमिति मां तताः ततोऽमखिललोकमात्मा देहसमुद्भवैः भरिष्यामि सुराशाकैरावृष्टे प्राणधारकैः शाकाम्बरीति विख्याति तदा यस्याम्यहं भुविं तत्रैव च वदिष्यामि दुर्गामाख्यां महासुरं दुर्गादेवीति विख्यातं तन्मे नाम भविष्यति पुनश्चाह यदा भीमं रूपं कृत्वा हिमाचले रक्षांसि भक्षयिष्यामि मुनीनां त्राणकारणं तदा मां मुनयः सर्वा श्रोष्यत्यानम्रमूर्तयः भीमादेवीति विख्यातं तन्मे नाम भविष्यति यदा रुणाख्यस्त्रैलोक्ये महाबाधा करिष्यति तदाहं भ्रामरं रूपा कृत्वा सङ्केय्य षट्पदं त्रैलोक्यसहितार्थाय वदिष्यामि महासुरं भ्रामरीति च मां लोकस्तदा शोष्यन्ति सर्वथा इत्थं यदा यदा बाधा दानवोत्था भविष्यति तदा वर्तिर्याहं करिष्याम्यरिसंक्षयम् ॐ स्वस्ति श्री मार्काण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी महात्म्ये नारायणी स्तुतिर्नाम एकादशोऽध्यायः श्री जगदम्बार्पणमस्तु। अथ द्वादशोऽध्यायः ध्यानम्। ॐ विद्युद्धामसमप्रभां मृगपन्थिस्कन्धस्थितां भीषणां कन्याभिः करवालकेटविलसद्दास्ताभिरासेवितां हस्तैश्चक्रगदासिकेट विशिकाश्चापं गुणं तर्जिनीं बिभ्राणमनलात्मिका शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। ॐ देव्योवाच जयन्ती मङ्गला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वाहा स्वदा नमोऽस्तु ते। येभिः सर्वैश्च मां नित्यं शोष्यते युसमाहितः तस्याहं सकलाबाधां शमयिष्याम्यसंशयं मधुकैटभनाशं च महिषासुरघातकं कीर्तयिष्यन्ति मे तद्वद्वन्द्वं शुम्भनिशुम्भयोः अष्टम्या च चतुर्दश्या नवम्या चैकचेतसा श्रोष्यन्ति चैव ये भक्त्या मम महात्म्यमुत्तमं न तेषां दुष्कृत्यं किञ्चित् दुष्कृत्योत्थानचापदं भविष्यन्ति न दारिद्र्यं न चैवेष्टा विनियोजनं शत्रुतो न भयं तस्य दस्युतो वा न राजतः न शस्त्रा न लतो योगात् कदाचित् सम्भविष्यति तस्मात् महामहात्मानां पठितव्यसमाहितैः श्रोतव्यं च सदा भक्त्या परं स्वयं महते उपसर्गानशेषास्तु महामारी समुद्भवान् तथा
त्रिमुदात्मा महात्म्यं शमयेन्मम यत्रैतत्पठते सम्यग् नित्यमायातने मम सदा न तद्विमोक्षामि साम्निध्यं तत्र मे स्थितं बलिप्रदाने पूजा अग्निकार्ये महोत्सवे सर्वममै महात्मा मुच्चायं श्रावमेव च जानता वापि बलिपूजा यथा कृतं प्रतीक्ष्यष्टाम्यहं प्रीत्या वह्निहोमं तथा कृतं शरत्काले महापूजा क्रियते या च वार्षिकी तस्मान् मम महेत्मानात्मां श्रुत्वा भक्तिसमन्विता सर्वबाधाविनिर्मुक्तो धनधान्यसमन्वितः मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यन्ति न संशया श्रुत्वा मम महात्मानां तथा चोत्यत्ययं शुभा पराक्रमं च युद्धेषु जायते निर्भयः पुमान् रिपवः संशयं यान्ति कल्याणं चोपपद्यते नन्दते च कुलं पुंसा महात्म्यं मम शृण्वतां शान्तिकर्मणि सर्वत्र तथा दुःस्वप्नदर्शने ग्रहपीडासु चोग्रासु माहात्म्यं शृणुमान् मम उपसर्गाश्रमं यान्ति ग्रहपीडाश्च दारुणा दुःस्वप्नं च न विदृष्ट्वं सुस्वप्नमुपजायते बालग्रहाभिभूतानां बालानां शान्तिकारकं सङ्गातभेदे च नृणा मैत्रीकरणमुत्तमं दुर्वृतानामशेषाणां बलहानिकरं परं रक्षोभूतपिशाचानां पठनादेव नाशनं सर्वा महात्मानां मम सन्निधिकरां पशुपुष्पाग्रधूपैश्च गन्धदीपैस्ततोतमै विप्राणां भोजनै होमै प्रोक्षणीयै रहन्निशम् अनैश्च विविधैर्भोगै प्रदानैर्वत्सरेणया प्रीतिमे क्रियते सास्मिन् सकृदुच्चरिते श्रुते श्रुतुहरति पापानि तथा आरोग्यप्रयच्छति रक्षां करोति भूतेभ्यो जन्मानां कीर्तना मम युद्धेषु चरितं यन्मे दुष्टदैत्यनिबर्हणम् तच्चरिते वैरीकृतं भयं पुंसा न जायते युष्माभिः स्तुतयो याश्च ब्रह्मर्षिभिः कृताः ब्रह्मणा च कृतस्यास्यो प्रयच्छन्ति शुभां मतिः अरण्ये प्रान्तरे वापि दावाग्निपरिवारिताः दस्युर्भिर्वानृवृत्तः शून्ये गृहीतो वापि शत्रुभिः सिंहव्याघ्रानुयातो वा वने वा वनहस्तिभिः राज्ञा क्षुद्रेण चाज्ञप्तो वध्यो बन्धगतोऽपि वा अगूर्णीतो वा वातेन सितपोते महार्णवे पतस्तु चापि शस्त्रेषु सङ्ग्रामे वृषधारिणे सर्वबाधासु घोरासु वेदनाभ्यर्दितोऽपि वा स्मरणमैश्चरितं नरो मुच्येत सङ्कटात् मम प्रभावत्सिहाद्या दस्यवो वैरिणास्तदा दूरादेव पलायन्ते स्मरतश्चरितं मम ऋषिरुवाच जयन्ती मङ्गला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वाहा स्वधा नमोऽस्तु ते इत्युक्ता सा भगवती चण्डिका चण्डविक्रमा पश्यन्तां सर्वदेवाना तत्रैवान्तरदीयता तेऽपि देवा निरान्तकाः स्वाधिकारान्यथा पुरा यज्ञभागा भुजः सर्वे चक्रुर्विनिहतारयः दैत्याश्च देव्यनिहते शुम्भे देवरिपौ युधि जगद्विध्वंसके तस्मिन् महोग्रे तुलविक्रमे निशुम्भे च महावीर्ये शेषाः पातलामाययुः एवं भगवती देवी सा नित्यापि पुनः पुनः सम्भूय कुरुते भूपा जगतः परिपालनं तयेन्महोत्स्ये विश्वं सैव विश्वं प्रसूयते सा याचिता च विज्ञानं
तुष्ट्वा बुद्धिं प्रयच्छति व्याप्तं तयैत्सकलं ब्रह्माण्डं मनुजेश्वरा महादेव्या महाकाली महामारी स्वरूपया सैव काले महामारी सैव सृष्टिर्भवत्यजा स्थितिं करोति भूतानां सैव काले सनातनी भवकाले नृणा सैव लक्ष्मीवृद्धिप्रदा गृहे सैव भावे तथा लक्ष्मी विनाशोयोपजायते स्तुता सम्पूजिता पुष्पै गन्धै धूपादिभिस्तदा ददाति वित्तं पुत्राश्च मतिं धर्मे तथा शुभम् ॐ स्वस्तिस्ति इति श्री मार्काण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवाश्चरित्रमाहात्म्ये भगवती वाक्यं नाम 12ोऽध्यायः इति श्री जगदम्बार्पणमस्तु। ॐ अथ 13ोऽध्यायः ध्यानम् ॐ बालार्कमण्डलाभासां चतुर्बाहुं त्रिलोचनां पाशाङ्कुशवराभितिर्धारयन्तीं शिवां भजे। ॐ ऋषिर्वाच जयन्तं देवी चामुण्डे जय भूतार्तिहारिणि जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमोऽस्तु ते। एतत्ते कथितं भूपं देवी माहात्म्यमुत्तमम् एवं प्रभास्य वा देवी ययेदं धार्यते जगते विद्या तथैव क्रियते भगवद्विष्णुमायया तया त्वमेष वैश्यश्च तत्येवान्ये विवाकिनः मोह्यन्ते मोहिताश्चैव मोहमेष्टन्ति चापरे तामुपैः महाराज शरणं परमेश्वरीम् आराधिता सैव नृणां भोगस्वर्गापवर्गदा। मार्काण्डेय उवाच जयन्ती मङ्गला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वाहा स्वदा नमोऽस्तु ते इति तस्य वचं श्रुत्वा सुरतः सा नराधिपः प्रणिपत्य महाभागं तमुष्टि संश्रितव्रतं निर्विण्योति ममत्वेन राज्यापहरणेन च जगाम सद्यस्तपते सा च वैश्यो महामुने सन्दर्शनार्थमम्बाया नदीपुलिनमास्थितः स च वैश्यस्तप्तस्तेपे देवी सूक्तं परं जपन् तौ तस्मिन् कुलिते देव्या कृत्या मूर्तिं महीमहीं अर्हणां चक्रतुस्तस्वा पुष्पधूपाग्नितर्पणैः निराहारौ यथात्पानौ तन्मनस्कौ समाहितौ ददौ तुस्त्वं बलिं चैव निजगात्रास्य कुगुक्षितम् एवं समाराधयत्तोस्भिर्भिवर्षै यथात्मनोः परितुष्टा जगद्धात्री प्रत्यक्षं प्राह चण्डिका देव्यो उवाच ॐ जयन्ती मङ्गला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वाहा स्वदा नमोऽस्तु ते। यथात् प्रार्थ्यते त्वया भूपा त्वया चाकुलनन्दना मत्त सत्पात्पत्यां सर्वपरितुष्टा ददामि तत्। मार्काण्डेय उवाच जयन्ती मङ्गला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वाहा स्वदा नमोऽस्तु ते। ततो व्रवे नृपो राज्य मुनिभ्रंश्यन्यजन्मनि अत्रैव च निजं राज्यं हतशत्रुबलं बलात् सोऽपि वैश्यस्ततो ज्ञानं ब्रवे निर्वीणमानसः ममेत्यहमिति प्राज्ञा सङ्गमिच्युतिकारकं देव्यो उवाच जयन्ती मङ्गला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वाहा स्वदा नमोऽस्तु ते। स्वलैरहोभिर्नृपते स्वं राज्य प्राप्यते भवान् हत्वा रिपुनस्खलितं तव तत्र भविष्यति कृतश्च भूयः सम्प्राप्त्या जन्मदेवादिवस्वतः सावर्णिको मनुर्नाम भवान् भुवि भविष्यति वैश्यवर्या त्वया यश्च वरोऽस्मतोऽम्बि वाञ्छिताः तं प्रयच्छामि संसिद्ध्या
तव संसिद्ध्यै तव ज्ञानं भविष्यति। मार्कण्डेय उवाच जयन्ती मङ्गला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री कालरात्रि नमोऽस्तु ते इति दत्त्वा तयो देवी यथा बिलशितं वरं बभूवान्तर्हिता सद्यो भक्त्या ताभ्यामनुविष्टता। एवं देव्या वरं लब्धा सुरतः क्षत्रियर्षभः सूर्यजन्म समासाद्य सावर्णी भविता मनुः पुनः इति दत्त्वा तयो पुनः एवं देव्या वरम् ओ क्लीं ॐ स्वस्ति श्री इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी महात्म्ये सुरतवैश्वर्यो वरप्रदानं नाम त्रयोदशोऽध्यायः इति जगदम्बार्पणमस्तु। अथ खड्गचक्रादेषु चापर परिगाशूलं भुषुण्डिशिर शङ्खः सन्दद्यति करैस्त्रीनयना सर्वाङ्गभूषामृतां नीलाश्मद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यावस्तोत्वपिते हरौ कमलजौ हन्तु मधुकैटभो अक्षस्फुरषु गदेषु कुलिशं पद्मं धनुं कुण्डिकां दण्डं शक्तिमसिं च चर्मजलजं घण्टासुराभाजनं शूलं पाशसुदर्शने च ददति हस्तै प्रसन्नानां सेवे सैरिभव ममर्दीनि महालक्ष्मी सरोजस्थितां कण्ठशूलहलानि शङ्खमुसले चक्रधनुं सायकं हस्ताभे ददन्ति गणान्तविलसच्चिता तुल्य प्रभां गौरीदेह समुद्भवा त्रिजगतमाधारभूता महापूर्वमत्रं सरस्वती मनुभजे शुम्भादिदैत्यनम् ॐ अथ श्री जगदम्बार्पणमस्तु। अथ मूर्तिरहस्यं ऋषिरुवाच ॐ नन्दा भगवती नाम या भविष्यजानन्दजा सुता सा पूजिते भक्ता वशीकुर्या जगत्त्रयं कनकोत्तमकान्ती सा सुकान्ती कनकाम्बरा देवी कनकवर्णाभा कनकोत्तमभूषणा कमलाङ्कुशपाशाब्दे अलङ्कृतचतुर्भुजा इन्दिरा कमला लक्ष्मीः सा श्रीरुक्माम्बुजासना या रक्तदन्तिका नाम देवी प्रोक्ता मया नगा तस्या स्वरूपवक्ष्यामि शृणु सर्वभयापहां रक्ताम्बरा रक्तवर्णा रक्तसर्वाङ्गभूषणा रक्तायुधा रक्तनेत्रा रक्तकेशातिभीषणा रक्ततृष्णानका रक्तदशना रक्तदंष्टिका पतिं नारी वानुरक्ता देवी भक्तं भजे जनं वसुदेव विशाला सा सुमेरुयुगलस्तने दीर्घौ लम्बावती स्थूलौ तावतीव मनोहरौ कर्कशावति कान्तौ तौ सर्वानन्दपयोनिधि भक्त्यान् सम्पायुधा देवी सर्वकामाधुकौ स्तनौ खड्गं पात्रं च मुसलं लाङ्गलां च बिभ्रती सा आख्याता रक्तचामुण्डा देवी योगेश्वरीति च अनया व्याप्तमखिलं जागत्साम्बरजङ्गमम् इमां या पूजयेद्भक्ता सा व्याप्नोति चराचरम् अदितेय इमं नित्या रक्तदन्ता वपुस्सवं तं सा परिचरेद्देवी पतिं प्रियमिवाङ्गना शाकाम्बरी नीलवर्णा नीलोत्पलविलोचना गम्भीरनाभिस्त्रीवली विभूषिततनूदरी सुकर्कशसुमोत्तुङ्गा वृत्तपीनघनस्वनी मुष्टिं शीलीमुखापूर्णं कमलं कमलालया पुष्पै पल्लवमूलादि फलाढ्यां शाकसञ्चयं काम्यान्तरसंयुक्तं क्षुत्पुण्यभयापहं कार्मुकं च सुरत्कान्ति बिभ्रती परमेश्वरी शाकाम्बरी शताक्षी सा
सैवा दुर्गा प्रकीर्तिता विशोका दुष्टदमनी शमनी दुरितापदाम् उमा गौरी सती चण्डी कालिका सा च पार्वती शाकाम्बरीं सुवन्द्यायन् जपन् सम्पूजयन् मनन् अक्षयमश्नुते शीघ्र मन अन्नपानामृतं फलं भीमापि नीलवर्णा सा द्रंष्टा दशनभासुरा विशाललोचना नारी वृत्तपीनपयोदरा चन्द्रहासं च डमरो शिरः पात्रं च बिभ्रति एकवीरा कालरात्रि सैवोक्ता कामदा स्तुता तेजोमण्डलदुर्दर्शा भ्रामरी चित्तकान्तिभृते चित्रानुलेपना देवी चित्राभरणभूषिता चित्रभ्रमणपाणिः सा महामारीति गीयते इत्येत्या मूर्तयो देव्या व्याख्याता वसुधाधिपा जगन्माताशु चण्डिकाया कीर्तिता कामधेनवः इदं रहस्यं परमं न वाच्या कस्यचित् त्वया व्याख्यानं दिव्यमूर्तिनामाभीष्टफलदायकं तस्मात् सर्वप्रयत्नेन देवी जपं निरन्तरं सप्तजन्मैजितै घोरै ब्रह्मा हत्या समैरपि पाठमात्रेण मन्त्राणां मुच्यते सर्वकील्बिषै देवाध्यानं मया ख्यातं गुह्याद् गुह्यतरं महते तस्मात् सर्वप्रयत्नेन सर्वकामफलप्रदं सर्वरूपमयं देवी सर्वं देवीमयं जगति आतोऽहं विश्वरूपत्वां नमामि परमेश्वरीं सर्वरूपमयं देवी सर्वं देवीमयं जगति आतोऽहं विश्वरूपां त्वां नमामि परमेश्वरी इति मूर्तिरहस्यसम्पूर्णम् जगदम्बार्पणमस्तु क्षमा प्रार्थना अपराधसहस्राणि क्रियन्तेर्हर्निशं मया दासोऽहमिति मां मत्वा क्षमस्व परमेश्वरी आवाहनं न जानामि विसर्जनं पूजां चैव न जानामि क्षम्यता परमेश्वरी मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरी यत्पूजितं मया देवी परिपूर्णतदस्तु मे अपराधं शतं कृत्वा जगदम्बेति चोच्चरेते यां गतिं समाप्नोति न त्वां ब्रह्मादयसुराः साम्परोदोऽस्मि शरणं प्राप्नत्यां जगदम्बिके इदानीमनुकम्प्योऽहं यथेच्छति तथां कुरुम् अज्ञानद्विस्मृतैर्भ्रान्त्यां यन्मूनधिकं कृत्यं तत्सर्वं क्षम्यतां देवी प्रसीद परमेश्वरी कामेश्वरी जगन्माताः सच्चिदानन्दविग्रहे गृहाणाचार्यमीमां प्रीत्या प्रसीद परमेश्वरी गुह्यातिगुह्यगोप्तित्वं गृहाणास्मा कृतं जपं सिद्धिर्भवतु मे देवी त्वत्प्रसादात् सुरेश्वरी श्री दुर्गार्पणमस्तु सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते नारायणी नमोऽस्तुते नारायणी नमोऽस्तुते श्रीजगदम्बार्पणमस्तु। अथ सिद्धकुञ्जिकास्तोत्रम्। शिव उवाच शृण्वन् देवी प्रवक्ष्यामि कुञ्जिकास्तोत्रमुत्तमं येन मन्त्रप्रभावेण चण्डी चापाशुभो भवेत् न कवचं न गलास्तोत्रकीलकं न रहस्यं न सूक्तं नापि ध्यानं च न्यासो न च वार्चनं कुञ्जिकापाठमात्रेण दुर्गापाठफलं लभेत् अतिगुह्यतरं देवी देवानामपि दुर्लभं गोपनीयं प्रयत्नेन स्वयोनेरिव पार्वती मारणं मोहनं न वश्या स्तम्भनोच्चाटनादिकं पाठमात्रेण संसिद्ध्यत् कुञ्जिकास्तोत्रमुत्तमम्। अथ मन्त्रः ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विचे
ॐ गौ हूं क्लीं जूः सः ज्वालय ज्वालय ज्वल ज्वल प्रज्वल 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 ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे ज्वल हं सं लं क्षं पट् स्वाहा इति मन्त्रः। नमस्ते रुद्ररूपिण्ये नमस्ते मधुमर्दिने नमस्ते कैटभहारिण्ये नमस्ते महिषार्दिनि नमस्ते शुम्भहन्त्यै च निशुम्भासुरघातिनि जाग्रतं हि महादेवी जपं सिद्धं कुरुष्ट मे ऐङ्कारी सृष्टिरूपायै ह्रीङ्कारी प्रतिपालिका क्लीङ्कारी कामरूपिण्ये बीजरूपे नमोऽस्तु ते चामुण्डा चण्डघाती च ऐङ्कारी वरदायिनी विच्चे च भयदा नित्यं नमस्ते मन्त्ररूपिणी धां दीं दूं दुर्जटे पत्नीं वां वीं वूं वागधीश्वरी क्रां क्रीं क्रूं कालिका देवी शां शीं शूं मे शुभं कुरुं ह्रुं ह्रुं ह्रुंकाररूपिण्ये जं 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 जम्बनादिनी बां ब्रीं भ्रूं भैरवी भद्रे भवान्येते नमो नमः अं कं चं टं तं पं यं शं वीं दुं ऐं वीं हं क्षं दिजाग्र त्रोटय दीप्तं कुरुं कुरुं स्वाहा पां पीं पूं पार्वती पूर्णं कां कीं कूं केचरी तथा सां सीं सूं सप्तशती देव्या मन्त्रसिद्धिं कुरुष्टु मे इदं तु कुञ्जिका स्तोत्रं मन्त्रजागर्ति हेतवे अभक्तेनैव दातव्यं गोपितं रक्ष पार्वती येस्तु कुञ्जिकया देवी हीनां सप्तशतीं पठेते या न तस्य जायते सिद्धि अरण्ये रोदने यथा इति श्री रुद्रायामाले गौरीतन्त्रे शिवपार्वती संवादे कुञ्जिका स्तोत्र सम्पूर्णं जगदम्बार्पणमस्तु हरिः ओम्।